Hello everyone, welcome to Dakshana e-classroom program. So in last lectures or in the past we have discussed about basically Bohr model, and before that J.J. Thomson's that experiment that led to the discovery of electron. That was like basically you can say a big step in modern physics actually. उसके बाद काफ़ी सारे और एक्सपेरिमेंट हुए और बहुत सारी चीज़ें आगे डिस्कवर होकर के आई, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इज इट। और अपन ने देखा था कि रॉन्टिजन ने भी वही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश किया। ही फाउंड समथिंग न्यू एंड दैट वाज एक्सरे। सो वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट दैट। तो अभी तक अपने पास लाइक एक इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो चुका है, एटम भी है, समझ में भी हमें आ गया था कि एटम के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन लाइक ओरिएंटेड हैं, कहाँ रखे हुए हैं, एंड inside atom an electron is basically bounded to the nucleus with some amount of energy, जो कि अपन ने बोर मॉडल में निकाली थी कि फर्स्ट ऑर्बिट में उसको एनर्जी कुछ चाहिए होती है। अगर आप चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वी डिफाइन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन है, एटम है, एंड इट्स बाउंडेड एक्चुअली। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि वो एनर्जी हम कैसे उस एटम को या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा रहे हैं, based on that actually there is possibility of emission of electron. तो there are different ways for emission of electron. तो अभी अपन पहले वो देखने वाले हैं what are different ways of electron, और इसमें जो अपने पास लाइक मेन इंपॉर्टेंट है that is basically photoelectric emission, जहाँ पे एक फोटोन या फिर जब लाइट गिरती है मेटल सरफेस पे देन इलेक्ट्रॉन्स एमिट, और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। सो द पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज बेसिकली our photoelectric emission, or we call that photoelectric effect, right? So let me first tell you what are the different types of emission of electron, is it? So one is called basically, one is thermionic emission. So what is thermionic emission actually? ये आपको अभी समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम के अंदर दैट इज बाउंडेड टू द एटम, राइट, और न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है या एक एटम के अंदर कुछ एनर्जी से बाउंडेड है, इज इट, बाउंडेड विथ सम एनर्जी। तो अगर हम इसको वही एनर्जी किसी भी तरीका से प्रोवाइड कर देते हैं देन इट विल कम आउट, इज इट, एंड दिस इज कॉल्ड एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन में क्या होता है, वी प्रोवाइड द सेम दिस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय हीटिंग द metal surface or heating the plate or heating the atom. So when an electron comes out on heating, is it, we call that thermionic emission. Emission of electron due to thermal means heating, is it? So thermionic emission means emission of electrons on heating, is it, the material और you can say metal. तो जब इसको हम हीट करते हैं then like electron gain that amount of energy and it comes out and we call that thermionic emission. Next one is field emission. तो यहाँ पर अभी देख सकते हो कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज and attracted, bounded and all that. Sometimes what happen actually, we apply strong electric field, is it, strong electric field is applied such that this electric field pushes this electron out, right, because the force, electric force on the electron will be E into E, is it? So this, when E is very strong, then this force is sufficiently enough to pull this electron out of this atom, and that's way the electron comes out from the surface, comes out from the metal plate or from the material. We call this is field emission, is it? So emission of electron, this is emission of electron when a very strong electric field is
applied the electric force F, that is equal to E, push the electron out, or pull out the electron from atom, and this is called field emission. Next is secondary emission. तो इसमें आपको बताए थे, एक्चुअली में आपको एक्सरेज में याद होगा, तो एक्सरेज में क्या था, व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग द टारगेट मटेरियल, तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती थी कि एक तो इलेक्ट्रॉन सीधा कुछ डेविएट होकर के थोड़ा सा एक्सेलरेट होकर के पास कर जाता है विदाउट, इज इट like knocking out any other electron. There is another possibility when the electron strike with some electron inside the atom and it knock out that electron, is it? तो secondary emission का मतलब होता है कि एक high speed electron एक electron को निकाल देता है, right? So when a high speed electron knock out an electron from atom, or you can write metal. So this is called secondary emission. And the next one is photoelectric emission. So when a light of sufficient frequency is incident on metal surface, electrons comes out of surface. This is called photoelectric emission. So this is broadly like, or you can say the mainly four type of emission that you can understand actually. तो अभी हमें जो हमारा फोकस है in this part will be mainly on this part. तो ये तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब कि लाइट अगर एक मेटल सरफेस पे गिर रही है, उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं सरफेस से एंड वी कॉल दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम पे जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्रॉडली लाइक डिस्कस किया गया, उस टाइम पे जो लाइट का था दैट वाज प्रीवेल्ड लाइक वेव नेचर ऑफ लाइट. You must be remembering the things from the wave optics. I told you the story about the light, how research and how studies went on in the light. तो पहले न्यूटन की corpuscular theory आई, almost for around a century that existed. Then like Heisenberg also gave its theory, wave theory, but dumped. Then Thomas Young came with that YDSE, Young's double slit experiment, and that like started scientists to like force scientists to think about the light from wave nature. तो उसके बाद और भी कुछ experiment आए, incident आए, and finally like it was considered that light is having wave nature. So now the point was that when this photoelectric effect comes into the light, when scientists started thinking about it, at that point of time it was actually wave nature of light. तो अभी हमें ये समझना है कि एक्चुअली में ये है क्या, इसमें क्या हो रहा है, राइट, और कैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गई थी. देन आइंस्टीन कम्स विद हिज न्यू थ्योरी, और बेसिकली प्लैंक क्वांटम गिव ए थ्योरी फॉर रेडिएशन ऑफ लाइक हीट बेसिकली फ्रॉम सम hot bodies. Einstein used that theory and extended it for light and was able to explain
the photoelectric effect in 1905. तो ये पार्ट अभी अपन को यहाँ पे समझने का है. So let's first understand what was exactly photoelectric effect or photoelectric emission in detail. Then we will see the problem and solution for that. Okay. Okay, so now we are going to discuss more about photoelectric emission, or we call that photoelectric effect now onward. तो simple effect क्या है ये तो आपको समझ में आ गया है. When light of sufficient frequency is incident actually, तो मान के चलते हैं कि ये अपने पास एक सिंपल सा सेटअप है. यहाँ पे एक प्लेट है अपने पास, राइट, मेटल प्लेट, और एक इस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंड लेट्स से देयर इज अनदर प्लेट एक्चुअली कनेक्टेड हियर, एंड गैल्वेनोमीटर इज आल्सो कनेक्टेड हियर टू सी द डिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या देखा गया है कि जब लाइट गिरती है यहाँ पे, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज ऑब्जर्व्ड. तो ये कब होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब आएगा, कि जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रीचिंग हियर टू दिस प्लेट. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव किए, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दैट केस देयर विल बी करंट इन द सर्किट एंड दैट विल रिजल्ट इन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. तो ये तो था अपना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Let me tell you some terminology about this effect and terms, is it? So, and more things about it. So first is photoelectrons. The electrons emitted from metal surface when light is incident on it. So these electrons are termed as photoelectrons, is it? Photoelectric current. The current in the circuit due to photoelectrons is called photoelectric current. तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी सारी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सिंपली लाइक जब लाइट गिर रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो यू कैन जस्ट इमेजिन दीज आर योर फोटो इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स जब एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली देखो यहाँ पे गैप है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ना हो देन देयर मस्ट बी नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर. लेकिन कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है ऑन व्हेन सम लाइट इज इंसिडेंट, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनको अपन ने नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉन जब दूसरी प्लेट पे जाएंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो गया, एंड दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, some current in the circuit, and we call that as photoelectric current, right? Okay, next, work function. So you must be like clear with this part already. यहाँ पे अभी आपको बताए थे कि in every atom an electron is bounded to the atom with some amount of energy. Is it that minimum amount of energy required to be supplied to the electron to pull it out from the atom is termed as work function. तो work function क्या है? It is the minimum amount of energy required to be out from atom.
मीन्स हर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी से बाउंडेड होता है, तो उतनी एनर्जी हमें उस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी. सो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी नीड टू सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन टू पुल इट आउट फ्रॉम द एटम, दैट इज टर्म्ड एज वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन इट विल बी ए प्रॉपर्टी ऑफ, यू कैन राइट, अगर मेटल की बात कर रहे हैं तो ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा. सो वर्क फंक्शन विल डिपेंड्स ऑन द मटेरियल और ऑन द एटम, इज इट? सो इट डिपेंड्स ऑन द मेटल, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली मेटल की स्टडी करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिपेंड्स ऑन मेटल, और यू कैन राइट इन जनरल टर्म्स मटेरियल आल्सो, राइट. तो अलग अलग मटेरियल के लिए, और ये यहाँ पे देखो आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि जिस भी एटम में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा, मतलब सबसे लूजली, तो उसके लिए वर्क फंक्शन क्या होगा? लीस्ट होगा, करेक्ट. अब ये लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड, ये चीज़ें आपको पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर में, केमिस्ट्री में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड, इन सब का मतलब क्या होता है. आयोनाइजेशन एनर्जी हालांकि आपको बता दिए थे, एक्सप्लेन कर दिए थे कि मतलब क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का, क्लियर. तो वही आयोनाइजेशन एनर्जी को ही आप बोल सकते हो कि लाइक इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है वही आपका वर्क फंक्शन है, क्लियर. तो वर्क फंक्शन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन एक एटम से बाउंडेड है, जो हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वी कॉल वर्क फंक्शन. सो इट डिपेंड्स, सो इट इज एक्चुअली लीस्ट फॉर सीजियम. तो ये सीजियम के लिए सबसे कम होता है एक्चुअली में वर्क फंक्शन. ओके, सो लेट मी erase it. So we just saw the definition of photoelectric effect and few terms. For like just observing photoelectric effect, we just simply need light and the metal plate, right? We can observe photoelectric effect, but to study it we need some proper setup actually. So the setup which is used for studying photoelectric effect, I have just drawn it here actually. Let me explain you what is all this. तो यहाँ पे अपने पास है एक सेल जो कुछ वोल्टेज का है, and here we have connected rheostat. Rheostat का मतलब आपको समझ में आना चाहिए वेरिएबल resistance, and here we have voltmeter which is actually measuring the potential drop across cathode and anode plate, and ammeter which shows deflection or measuring the current flowing in this circuit actually. तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हम रियोस्टेट को कुछ यहाँ रेजिस्टेंस पे सेट कर देते हैं, सो देयर विल बी सम पोटेंशियल डिफरेंस, और उस सिचुएशन हम ये भी देख लेते हैं कि हाँ एक्चुअली देयर इज नो करंट इन द सर्किट व्हेन नो लाइट इज फॉलिंग ऑन दिस एक्चुअली प्लेट. तो ये बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर लगाया है उसकी वजह से कोई करंट नहीं आ रहा है सर्किट में, राइट. सो वी विल मेक श्योर दैट, वी विल चेक दैट. इसके लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है कि आपको ये लाइट को ऑफ कर देना है, राइट. जस्ट स्विच ऑफ द लाइट एंड चेक कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल लगा करके अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ करंट अपना डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं एमीटर में. तो वी चेक दैट कि यहाँ इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो वो प्रूव कर रहा है कि जो भी यहाँ पे अगर करंट आएगा तो वो इस लाइट की वजह से ही आएगा, ना कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से. ओके, तो अभी अपन को समझ में आ गया था कि ये अपने पास सेटअप है. यहाँ से जब व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, सम इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम दिस प्लेट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स, इनको अपन फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, करेक्ट. ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर प्लेट पे जा रहे हैं, एनोड प्लेट पे, सो यू कैन सी द सर्किट इज कंप्लीटेड एंड हियर वन करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस सर्किट एंड दैट वी डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. ओके, and this is positive plate, actually you can see this is negative plate connected here. Now what is happening, like, तो मान लेते हैं कि ये जो रियोस्टेट है अभी अपन ने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, तो मतलब कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो जितना ये आगे यहाँ तक जाएगा तो उतना ही रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया जाएगा, उतना ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाता है एक्चुअली में. जस्ट 1 second. Here it will be actually, this should be connected here also, because otherwise circuit is not complete, right. So it should be here connected.
तो अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इतना इसके अक्रॉस जितना लाइक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर आएगा एक्चुअली में। तो अभी पहले अपन ने इसको कम करके देख लिया और यहाँ पे कोई करंट नहीं था। हाँ, फिर इसमें जो लाइक थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं अब लाइक ऑब्जर्व करने के लिए, एंड सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट आल्सो। तो अभी यहाँ पे जो भी करंट आता है उसको अपन ने क्या बोलेंगे, फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब देखो जो इसमें ऑब्जर्व क्या किया गया एक्चुअली में कि ये जो वोल्टेज है इसको अपन ने पहले कम रखा, तो यहाँ पे हो क्या रहा था, कुछ करंट, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे एंड सम आर रीचिंग हियर एंड दैट विल रिजल्ट इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अब इस पोटेंशियल को बेसिकली यहाँ पे तो बड़ा कम, मतलब लाइक इसको तो कांस्टेंट कर रखा है, लेकिन ये रियोस्टेट को अगर मैं इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो ये जो वोल्टेज है वो बढ़ता है, और ये वोल्टेज बढ़ाने से ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जो करंट है एमीटर रीड कर रहा है दैट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, उसका रीजन भी मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो आपको अभी मतलब बहुत डिटेल में हम समझाएंगे अच्छे से। आइंस्टीन जब एक्सप्लेन करी कि ये कि कैसे कैसे चीज़ें, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड इट हियर कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो कुछ के पास तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है जो दौड़ते हुए यहाँ पहुँच जा रहे हैं, और कुछ के पास बहुत कम एनर्जी है जो कि लाइक निकल तो गए बट यहीं पे कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना करके वहीं पे रुक जाते हैं। समझ में आ रहा? तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे थे, राइट। बट व्हेन वी आर अप्लाइंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पॉजिटिव प्लेट मतलब थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल ज़्यादा जाएगा तो ये उन इलेक्ट्रॉन को भी खींचना शुरू कर देती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक सिचुएशन आती है कि जहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर पहुँचने लग जाएं तो वहाँ पर क्या हुआ, जो करंट है अपना फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एक मैक्सिमम करंट पहुँच जाएगा। अब उसके अलावा अब उसके बाद तो आप इस पोटेंशियल को और बढ़ाओ तब भी क्या होगा, इसकी वजह से तो कोई करंट यहाँ आ नहीं रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रीच करेंगे, एट दैट टाइम करंट इन द सर्किट रीचेस ए मैक्सिमम वैल्यू फॉर ए पार्टिकुलर इंटेंसिटी एंड दैट करंट इज टर्म्ड एज सैचुरेशन करंट, इज इट? सो लेट मी डिफाइन दैट. Let me just write it. Okay, so the term that is called saturation current. So this saturation current actually it is the like when all the electrons emitted from cathode reaches the anode, at that time anode plate, the current in the circuit will be maximum and that is called basically your saturation current, right? तो saturation current में अभी आपको बताए थे कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो निकलते हैं वो कुछ यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अगर ऐसा लाइक होता है कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड प्लेट से निकल रहे हैं वो एनोड प्लेट पे पहुंच जाएं, उस टाइम पे जो सर्किट में करंट होगा, उस टाइम पे जो एमीटर की रीडिंग होगी, दैट विल बी टर्म्ड एज योर सैचुरेशन करंट। ओके, सो नेक्स्ट आवर टर्म इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अभी देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड for which the current in the circuit drops to zero, that is termed as stopping potential. Let me explain you a little bit. अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सो मीन्स योर एनोड इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकले वो क्या हो रहे होंगे, ये प्लेट खींच रही होगी। एनोड इज, यू कैन राइट पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो अभी क्या हो रहा है, एनोड उनको खींच रहा है। अगर मैं इस पोटेंशियल को कुछ नेगेटिव कर देता हूं तो ये सच दैट नेगेटिव हो जाता है और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, और ये पोटेंशियल ऑफ एनोड with respect to cathode is negative, is it? So negative potential of anode with respect to cathode, for which no electron is reaching this anode plate. Understanding? उस सिचुएशन में क्या होगा, करंट इन द सर्किट विल बी जीरो। तो वो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा, दैट पोटेंशियल इज टर्म्ड एज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिमेंबर दैट, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, फॉर विच current in the circuit drops to zero is called stopping potential. हाँ, बाकी ये जो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड दैट इज लेस देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी कॉल दैट एज रिटार्डिंग पोटेंशियल। थोड़ा सा अभी आगे अपन समझेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज़ें आपको और थोड़ा सा लाइक डिटेल में लाइक समझ में आएंगी। बाकी मतलब क्या है इनका, दैट शुड बी क्लियर अप टू यू हियर। तो ये तो था कि लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है एंड सम टर्मिनोलॉजी।
अब इसके जो ऑब्जर्वेशंस थे दैट वाज मेड बाय आइंस्टीन, तो उन्होंने लाइक काफ़ी इसको डिटेल में समझा और कुछ कुछ ग्राफ्स वगैरह प्लॉट किए. लेट्स सी दोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ आइंस्टीन, राइट, फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Okay, so let's see next the observations regarding photoelectric effect made by Einstein. तो आइंस्टीन ने थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझा, चीज़ों को लाइक वेरी करा करके देखा डिफरेंट चीज़ों को, तो उनका क्या इफेक्ट था वो अभी अपन को समझने का है. सो बाय दिस टाइम यू मस्ट बी क्लियर विद सम टर्मिनोलॉजी अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोइलेक्ट्रिक करंट, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल. फ्यू मोर टर्म्स विल बी देयर, आई विल टेल यू दैट. ओके, तो अभी देखो इसमें था क्या, ये तो पूरा सेटअप है पूरा, यू कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे जो लाइट है वो गिर रही है एंड वी आर ऑब्जर्विंग बाय कीपिंग ऑल एवरीथिंग कांस्टेंट, बाकी सब चीज़ों को कांस्टेंट करके ये यहाँ पे करंट. तो आइंस्टीन ने क्या किया, फर्स्ट थिंग लाइक ही मेड एवरीथिंग कांस्टेंट एंड इंक्रीज द इंटेंसिटी, इज इट. सो बाय कीपिंग frequency constant, if intensity of light is increased, right. आइंस्टीन ने ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट versus this is intensity of light, then the graph for this comes out to be straight line. Means as you increase the intensity, your photoelectric current increases by keeping frequency and the metal plate and target plate all remaining things constant. So this is one of the observation of like Einstein regarding photoelectric effect ke like photoelectric current simply increases by increasing intensity, right. Okay, second thing, अभी यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, है ना. सो नेक्स्ट ही प्लॉटेड एक्चुअली दिस ग्राफ अगेन हियर फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी. ही सिंपली प्लॉटेड द ग्राफ between photoelectric current, so this is I, photoelectric current versus potential difference of anode minus cathode. Clear? What he observed, ये अभी आपको बताए थे कि एक नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, दिस इज पॉजिटिव, कैथोड माइनस एनोड, जीरो. यहाँ पे इधर क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल. तो यहाँ पे एक नेगेटिव पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है जहां पे क्या होगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जा रहा है. इसको अपन ने क्या नाम दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो Vs इज, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्लियर? जो कि एनोड माइनस कैथोड एंड नेगेटिव. सो रिमेंबर दैट इट विल बी लाइक माइनस एक्चुअली, जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में तो माइनस. तो ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पोटेंशियल है इसको हम यहां से वेरी कराते जा रहे हैं और यू कैन सी कि बढ़ाते जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में. देन व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, दिस करंट, photoelectric current increases and it increases up to a limit actually. This is saturation. तो उसके बाद क्या होता है, ये जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनोड माइनस कैथोड, एक मैक्सिमम वैल्यू तक आप बढ़ाते हो तो करंट आपका बढ़ता है. उसके बाद एज यू इंक्रीज दिस पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल योर करंट डज नॉट इंक्रीज. तो ये टर्म अभी आपको, दिस टर्म इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट. क्लियर? तो अभी जो आपको बताए थे यहाँ पर सैचुरेशन करंट का मतलब आपको और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि सैचुरेशन करंट था क्या. तो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन करंट क्या है कि जहां पे लाइक मैक्सिमम करंट, इवन यू आर इंक्रीजिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल दिस करंट इज नॉट इंक्रीजिंग. तो ये क्या कैसे हो रहा है कि यहाँ पे जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये प्लेट क्या हो रही है, उनको खींच रही है. तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जितनी रेट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इज इट फ्रॉम कैथोड, एट द सेम रेट दे आर रीचिंग द एनोड प्लेट. At that point of time, your current in the circuit will be maximum and we call that saturation current. So here you can write actually in this case, when the rate
of emission of electron from cathode become equal to rate of reaching electron anode plate. At that time, current in the circuit become maximum and we call this is saturation current. What else? और इसमें क्या देखो उन्होंने ऑब्जर्व किया, see it here now, तो एक पार्टिकुलर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के लिए ये सिचुएशन है. सो दिस इज फॉर फिक्स्ड इंटेंसिटी and frequency of light, right? In this case what I am doing is we are changing the intensity keeping the frequency constant. Let me erase it and let me draw it here. So okay, next observation by Einstein was कि उन्होंने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो था उसको कांस्टेंट रखा. देन व्हाट ही ऑब्जर्व्ड एक्चुअली, तो अगर पहले वाली सिचुएशन ये थी, इज इट, लेट्स से दिस इज द एट इंटेंसिटी I1, I1 इज इंटेंसिटी and this is IS saturation current, right? So remember that difference, and this is your anode minus cathode and this is minus VS stopping potential. ये photoelectric current. Now what I am doing is I am keeping frequency constant, intensity को हम बढ़ा रहे हैं. तो उस सिचुएशन में क्या ऑब्जर्व किया गया एक्चुअली में, so the result was something like this. This is IS2 at intensity 2. Is it? तो ये क्या था, IS1. इंटेंसिटी 1 पे जो सैचुरेशन करंट ये है, इंटेंसिटी तो यहां पे लिख सकते हो इंटेंसिटी I2 is greater than I1. So as we are increasing the intensity, your saturation current increases. So these are all observation. ये simply क्या है कि हम experiment कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ों को बदल रहे हैं, कुछ चीज़ को constant रख रहे हैं, किसी को अब like change कर रहे हैं. उसके बाद हमें क्या result मिल रहा है, simply we are drawing that. अभी अपन इसको समझ नहीं रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, right? आई विल एक्सप्लेन दैट. वो अभी अपन ये भी देखेंगे कि ये सब चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को लाइट की वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी. फिर आइंस्टीन एक नई थ्योरी लेकर के आए, उससे उन्होंने इस सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया. तो अभी हम सिंपली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थे, वो अपन स्टडी कर रहे हैं. रिमेंबर दैट. ओके, तो अभी यहाँ पर है हमने कि तो यहाँ पे क्या किया, इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट. तो अभी रिजल्ट मिल रहा है हियर ऑन increasing the intensity by keeping frequency constant, saturation current increases but stopping potential remain same. This is the result. तो यहाँ पे simple terms कि इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो, I2 is the intensity, so this is intensity of light. Frequency we are keeping it constant. Frequency constant रखने से saturation potential stopping potential remaining constant, लेकिन saturation current अपना बढ़ जा रहा है. I2 higher intensity, lower intensity, intensity बढ़ाया, saturation current बढ़ गया. क्लियर? लेट्स सी कि अगर हमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख देते हैं और फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, देन व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, राइट? लेट्स सी दैट.
Okay, so in this case, now we are keeping the intensity constant, but frequency we are increasing, and the observed result was this actually. तो ये था, अगर let's say at frequency, just one second. This is a saturation current, and this is at frequency, let's say nu1. अभी अपन क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, एंड इट्स के करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, BS1 स्टॉपिंग पोटेंशियल. When frequencies increase, stopping potential increases. Started from here, like this. So this is at frequency nu2. Similarly, when it is increased further, but saturation current remains same. So this is VS2, VS3. So here this is frequency nu2, nu3. राइट, तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज. तो यहां पे आप देख सकते हैं एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज. थोड़ा सा अगर आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो इसमें देखो हो क्या रहा है कि यहां से क्या हो रहा है, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो पहुंच रहा है यहाँ पे. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है कि उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को ही अपन को स्टॉप करना है, क्योंकि अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन स्टॉप कर दिया तो बाकी उससे कम एनर्जी वाले तो ऑटोमेटिकली रुक ही जाएंगे. करेक्ट. तो बेसिकली दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्ड्स टू दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. क्लियर. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे अगर ये पोटेंशियल V है, राइट, सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, E इंटू V स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज इट. तो यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज. यू कैन राइट एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और यू कैन राइट KE max ऑफ इलेक्ट्रॉन increases with increase in frequency. Right, so this is about, and as we are not changing the intensity, so saturation current remaining same, as intensity is kept constant, so saturation current is constant. This is observation, right? Okay, so in next case what we are studying here, observing, is that we are using plotting the curve for maximum kinetic energy for different metals, where like light of different frequencies also incident, and we observing the maximum kinetic energy, is it. So here the graph, the plot for K max, this is K max for three like different metals, and this is the frequency. The observed graph was like this. This is metal 1, metal 2, metal 3, is it. So when different metals are used and K max versus frequency is plotted. तो अभी देखो इसमें हो क्या रहा है
एक तो अपन को ये पता चल रहा है कि हर एक मेटल के लिए वो फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होना स्टार्ट होगा दैट इज डिफरेंट. सो इस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको अपन बोलेंगे जहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे हेयर लाइक इससे कम फ्रीक्वेंसी के लिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैन राइट 0 है एक्चुअली में यहाँ पे. सो इससे कम फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, राइट. सो दिस इज द लीस्ट frequency at which we can observe photoelectric effect. उस frequency को अपन एक नाम देते हैं threshold frequency, is it? So here we define one quantity called threshold frequency. It is the least frequency at which photoelectric effect observed, right? Or you can write here the kinetic energy is 0 is called threshold frequency. So if nu is less than nu threshold, no photoelectric effect. मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं सिचुएशन. Another thing is this threshold frequency is different for different metals. So threshold frequency depends on the material. Is it? We know V threshold is different for different metals, right? So we can say V threshold depends on metal. ये कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं उस पर ये डिपेंड करता है. एंड आफ्टर दैट लाइक once this threshold frequency or light is let's say incident more than threshold frequency, then kinetic energy, maximum kinetic energy is actually directly proportional to what? Threshold frequency. So as you are increasing threshold frequency, maximum kinetic energy also increases. यही reason है कि stopping potential भी increase हो जाता है, क्योंकि एक जैसे यहाँ पर क्या है, पहली बात तो हमें अगर threshold frequency से कम वाली frequency है तब तो photoelectric effect ही ऑब्जर्व नहीं होता. उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट हम यूज़ कर रहे हैं, यस वी आर ऑब्जर्विंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड देन इफ वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेज. एंड बिकॉज ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज. तो इसीलिए अभी आपने पीछे देखा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू था वो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा था, right? So this is another observation of Einstein regarding photoelectric effect, right? Here we define one more term that is in terms of wavelength. So we call that threshold wavelength. तो अभी आपको ये तो मालूम है C is equal to lambda into F, is it? तो lambda into nu. C तो constant है. Frequency, because for electromagnetic wave or light C is constant, so this increases, this decreases, and vice versa. So we can write here actually lambda is equal to C by nu threshold. तो इसको अपन lambda threshold बोलेंगे. So lambda threshold क्या है? It is the maximum wavelength of light at which photoelectric effect is observed. मैक्सिमम वेवलेंथ को उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यू कैन राइट हियर इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा थ्रेशोल्ड नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मतलब नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट.
तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड एंड फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. यस, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये था कुछ टर्मिनोलॉजी एंड देयर वाज वन मोर ऑब्जर्वेशन बाय आइंस्टीन. लेट मी राइट दैट वन आल्सो. So the another observation of Einstein was that the photoelectric effect is an instantaneous process. Means जैसे लाइट एक मेटल प्लेट को स्ट्राइक करती है, immediately electrons are emitted from the plate. This is the observed result from the experiment. ऐसा नहीं हुआ कि लाइट इंसिडेंट हो रही है, then it is taking some time and then finally after some time lag electrons are emitted. तो ऐसा नहीं था. तो ये सब कुछ रिजल्ट थे, ऑब्जर्वेशंस थे जो आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किए रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि तो उसमें अपन ने देखा फ्रीक्वेंसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, सैचुरेशन करंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कौन सी चीज़ें कैसे, इंटेंसिटी और ये सब चीज़ें लाइक कहाँ से कैसे. तो इंटेंसिटी चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज करने से अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है. तो दीज आर ऑल लाइक थिंग्स दैट आइंस्टीन ऑब्जर्व हियर. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज इट. तो जो काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, इज इट, versus photoelectrons. So this kinetic energy here, number of electrons versus kinetic energy of electrons, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया. and this graph actually looks like something this. Means there are very few electrons. This is the K max. K max क्या होगा? E into V stopping potential, right? And this is number of photoelectrons. Number of photoelectrons emitted versus kinetic energy. मतलब कि जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा थे. ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे था. इट वाज लाइक दिस. So the number of photoelectrons having zero kinetic energy was still comparatively large. Number of photoelectrons having maximum kinetic energy was comparatively low, and remainings were like this actually. So this was number of photoelectrons emitted versus their kinetic energy graph. So these are all observations made by Einstein. अभी next lecture में अपन ये समझते हैं कि इन सब चीज़ों को explain करने में कैसे wave theory fail हो गई, and then how Einstein was able to explain all those things with the help of his new, that is Planck's quantum theory or quantum theory of light. So this is all about this lecture. Thank you so much.